ધોરણ 6 પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ બુક. પાના નંબર 30. પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ 11 વ્યક્ત થઈએ. તમે તમારા મિત્રો સાથે રિસેસ કે અન્ય સમયે સામાન્ય જ્ઞાનના પ્રશ્નો પૂછતા હશો. ક્યારેક વાતમાં ઉખાણા અને જોક્સ પણ કહેતા કે પૂછતા હશો. અહીં તમારે હિન્દીમાં આ પ્રકારની પહેલિયા એટલે કે ઉખાણા અને ચુટકુલે એટલે કે જોક્સ પુસ્તકો, વર્તમાનપત્રો કે અન્ય સંદર્ભ સાહિત્યમાંથી મેળવીને લખવાના છે. તમે લખેલા હિન્દી ઉખાણા અને જોક્સ વર્ગમાં રજૂ કરો. પહેલિયા એટલે કે ઉખાણા. વહ ક્યા હૈ જો આપકે સોતે ही नीचे गिर जाती है और आपके उठते ही वह भी उठ जाती है. જવાબ છે આપકી પલકે. આપણી આંખોની પાપણ છે આપણે સૂઈએ એટલે નીચે પડી જાય અને આપણે જાગીએ ત્યારે એ પણ જાગી જાય. પછીનું ઉખાણું જોઈએ. એક માँ કે દો બેटे दोनों है महान एक ठंडा दूसरा गर्म बताओ क्या है नाम. चंद्रमा और सूरज. ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्रीज में रखने के बाद भी गर्म रहती है. गरम मसाला. एक अंधा व्यक्ति क्या देख सकता है. अंधेरा. वह क्या है जो बाहर मुफ्त में और अस्पताल में पैसों से मिलती है. ऑक्सीजन. वह कौन है जो हमेशा पीटने के लिए ही बना है. टोल. चुटकुले. टीचर ने कहा 15 फलों के नाम बताओ. पप्पू ने कहा आम, सेब, अमरूद और 1 दर्जन केले. થઈ ગયા 15 ફળ. પછીનો જોઈએ. भिखारी ने कहा कुछ खाने को दे दो बाबा. आदमी ने कहा बाबा कल की रोटी खा लोगे. भिखारी ने कहा हाँ खा लूँगा. आदमी ने कहा तो कल आना. कंजूस बाप ने कहा बेटा मेरी ख्वाहिश है कि तू बड़ा होकर वकील बने. बेटे ने कहा क्यों. कंजूस बाप ने कहा ताकि मेरा काला कोट तुम्हारे काम आ जाए. दांत का डॉक्टर कहता है आपका दांत निकालना पड़ेगा क्योंकि ये सड़ चुका है. राजू ने कहा हाँ तो कितने पैसे लगेंगे. दांत का डॉक्टर कहता है बस 500 रुपये लगेंगे. राजू ने कहा 50 रुपये ले लो और थोड़ा सा ढीला कर दो. निकाल तो मैं खुद लूँगा.